Hello, hi students. I hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter 7, that is transportation in animals and plants. So इस chapter में we will learn how the various substances are transported in a body as well as in plants body. Okay, so this is going to be a really interesting chapter. Want you all to pay attention. So let's get started. Transportation in animals and plants. You had learned earlier that all the organisms need food, water and oxygen for survival. So आपको पता ही होगा कि जितने भी living organisms हैं उन्हें food, water और oxygen चाहिए ही होता है ताकि वो जिंदा रहें. ओके हमें हमेशा पानी, खाना और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. They need to transport all these like food, water and oxygen to various parts of the body. हमारा खाना, पानी और ऑक्सीजन ये हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हर एक सेल्स को मिलना चाहिए. So animals also need to transport waste to the parts from where they can be removed. और हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसे भी हमारे बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है. ओके सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम है? फूड, वाटर और ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करना और जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ है हमारे पूरे बॉडी में उसे हमें हमारे बॉडी से निकालना. So have you ever wondered how all these is achieved? So it is achieved by the process of transportation. So look at this figure 7.1. So you all can see how the figure 7.1 looks like. इस diagram में आप देख सकते हो यहाँ पे there is a heart. Okay, so this is the heart. And ये जो lines दिख रहे हैं आपको, blue lines or red lines, these are representing the blood vessels. Okay, veins and arteries are the types of blood vessels. So इस diagram में हम देख सकते हैं there is a heart as well as there are blood vessels. So they function to transport the substances and together they form the circulatory system. So heart और blood vessels का काम क्या है? इनका काम है जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उन्हें पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना और जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ है हमारे बॉडी में उन सबको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह लाना और उससे हमारे बॉडी से रिमूव कर देना. Okay, so this heart, along with the various kind of blood vessels, forms the circulatory system. So in this chapter, we shall learn about the transport of substances in plants as well as we will be learning about transportation of substances in animals. So first, let us get started with the circulatory system. We will understand the different components of a circulatory system. So let's start with blood. What happens when you get a cut on your body? अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी थोड़ा सा कट होता है तो क्या होता है? उस कट पार्ट से, उस इंजर्ड पार्ट से ब्लड निकलने लगता है, राइट? खून निकलने लगता है. So the blood flows out. But what is blood? Let's understand what is blood. So blood is a fluid. Fluid मतलब it is a liquid which flows in the blood vessels. अब ये blood vessels क्या है? Blood vessels are like pipes. जैसे कि हमारे घर में पाइप लाइन्स होते हैं, पाइप के अंदर पानी बहता है, वैसे ही ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर. ओके सो दिस इज द ब्लड and it flows inside the blood vessel. Can say it is a pipeline of the blood. Okay, so it transports the substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. So ये एक function है blood का. हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ओके, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और ये ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है. ये ब्लड का काम क्या है? ये ब्लड ऑब्जर्व करते हैं डाइजेस्टेड फूड को और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, to the other parts of the body. So what is happening? Small intestine से ये जो digested food है ये हमारे दूसरे body parts में पहुंच रहा है, transportation हो रहा है. So that is the function of blood. It helps in transportation.
जैसे कि अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो वी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइक वी यूज बस, train, planes. Okay. Similarly, in a body, when a substance has to move from one place to another, blood will do that job. Let's move on to the next example. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. Now, when we breathe in, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा lungs ये भर जाता है ऑक्सीजन से। अब हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, फ्रॉम अ फिंगर टिप्स टू द टोज इन आवर लेग्स। ओके, हमारे हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। तो अगेन ये ब्लड हमारे लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करेगा। दिस इज one of the other function of blood. Let's move on to another function. It also transports the waste for removal from the body. So हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ है वो उससे भी ट्रांसपोर्ट करके एक जगह लेके आता है ताकि वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए। So how does the blood carries various substances? Now the question arises, blood इतनी सारी substances को कैसे कैरी कर लेता है? So blood is composed of a fluid which is called as plasma. ओके, ब्लड में ये जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ओके, वी विल बी लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इनसाइड द ब्लड। सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. Paheli wants to ask a question. Why is the color of the blood red? Let's find out the answer. So as we have discussed, हमारे blood vessel में blood flow करता है, right? And इसमें बहुत सारे cells suspended रहते हैं, बहुत सारे cells flow करते हैं। इनमें से एक cell है red blood cells, okay, which is also called as RBCs. Now these RBCs, they contain a red pigment which is called as hemoglobin. ये हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे ब्लड को एक रेड कलर देता है। ओके, सो हीमोग्लोबिन दे बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स। सो हमने ऑलरेडी एक फंक्शन देखा है ब्लड का कि हमारे जो लंग्स में जितने भी ऑक्सीजन थे वो हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सीजन जो है ये बाइंड करता है विथ हीमोग्लोबिन एंड एज अ रिजल्ट ये हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे हर एक बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई है। ओके, सो एज अ रिजल्ट हमारे हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचता है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अगर hemoglobin नहीं होगा तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। So the presence of hemoglobin makes the blood appear red. So this is the reason why our blood is red in color. It is because of the presence of hemoglobin. अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनका ब्लड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है। इट इज बिकॉज उस ऑर्गेनिजम्स के ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड cells that are present in the plasma, which is the white blood cells. Okay, जैसे red blood cells होते हैं वैसे white blood cells होते हैं। इनका कोई proper shape नहीं होता है। So white blood cells, इन्हें हम WBCs भी कहते हैं। इनका काम है to fight against germs that have entered our body. So we come across various kind of germs in our day-to-day life. Okay, हर एक चीज में germs है, हमें बस दिखता नहीं है, right? They are very small and microscopic. So हमारे body में WBCs present होते हैं, specifically in our blood, which is going to protect our body from these germs. They will fight against these germs. Let's move on to the next type of blood cells present in our blood. So Buju fell down while playing a game. His knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that the bleeding had stopped and a dark-colored clot has plugged the cut. Buju was puzzled about this. So Buju was playing certain kind of game and he fell down and he got injured. अब हमें जब भी चोट लगता है तो हमारे उस चोट से खून निकलता ही है,
बट यू ऑल मस्ट हैव एवर वंडर्ड कि ये खून थोड़ा देर के बाद बंद हो जाता है, राइट? और जहाँ पे भी हमें वो कट आया है वहां पे एक क्लॉट फॉर्म होता है, डार्क कलर्ड का एक क्लॉट फॉर्म होता है। वो जो डार्क रेड कलर का एक सब्सटेंस हमारे कट को जो कवर कर रहा है उसे क्लॉट कहते हैं। ओके, सो ये जो क्लॉट है ये कैसे फॉर्म होता है? सो इट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये एक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स है हमारे ब्लड में, और इनका काम है ब्लड को क्लॉट करना। ओके, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ताकि जब भी कोई भी ब्लड वेसल्स टूट जाए, रप्चर हो जाए, रप्चर हो जाए मतलब कहीं पे भी हमें कट आए, इंजरी आए, वहां से ब्लड लॉस ना हो ज्यादा। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? वो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं? बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। So we have learned the different components of a blood. Okay, so हमारे blood में एक fluid है that is called as plasma. Okay, so this fluid is plasma, and इसके साथ बहुत सारे different types of cells present होते हैं। क्या क्या cells present है? इनमें present हैं red blood cells, white blood cells and platelets. Okay, so these are the different types of blood cells present in our blood. अब ये ब्लड फ्लो कहाँ करता है? द ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। सो लेट्स लर्न अबाउट ब्लड वेसल्स नाउ। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। डिफरेंट टाइप्स होते हैं ब्लड वेसल्स के। सो यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, देयर इज अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट फिल्स द लंग्स। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब हम सांस लेते हैं हमारा लंग्स ऑक्सीजन से भर जाता है, और ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को चाहिए। Also, the blood picks up the waste material, including the carbon dioxide from the cells. Okay, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट। सो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है along with carbon dioxide, ये सारे ब्लड उसे उठाते हैं from the different cells in our body. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for the removal of carbon dioxide, as you have learned in chapter 6. So ये blood क्या करते हैं? ये blood जितना भी carbon dioxide हमारे body में generate हुआ उसे collect करते हैं और वापस से उसे lungs में लेके जाते हैं, and then we exhale out. Okay, कैसे हमें remove कर रहे हैं carbon dioxide? By the process of exhalation, we exhale out carbon dioxide. So two types of blood vessels are there, that is arteries and veins. जब हम सांस लिए हमारा लंग्स फुल था ऑक्सीजन से, तो ये जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स, दे आर कॉल्ड एज arteries. Okay, so what are arteries? They carry the oxygen rich blood, the blood which is rich in oxygen. कहाँ से कैरी करते हैं? From the heart to all the parts of the body. So हमारा जो हार्ट है वो एज अ पंप काम करता है। ओके, सो आर्टरीज ये कैरी करेंगे ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ आर्टरीज में ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो होता है और बहुत ही हाई प्रेशर में फ्लो होता है। So the arteries, they have thick elastic walls. जो blood vessels हैं arteries के, इनका walls thick होता है because यहाँ पे pressure ज्यादा है। Okay, क्योंकि हमारा हार्ट आर्टरी से हर एक बॉडी पार्ट में पंप कर रहा है ब्लड फ्रॉम द हेड टू द टो, तो उसके लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए। सो द आर्टरीज दे आर हैविंग थिक इलास्टिक walls. So now we will be conducting an activity to study the flow of blood through the arteries. And let's start with activity 7.1. Place the middle and index finger on your right hand on the inner side of your left wrist. So हमें अपने right hand के middle और index finger को अपने left hand के wrist में रखना है. Okay? So can you feel some throbbing movements? Throbbing मतलब beating movements. So why do you think there is throbbing? ये throb, ये beat क्यों कर रहा है ये वाला part? So this throbbing is called as pulse.
and it is due to the blood flowing in the arteries. So now you can count the number of pulse beats in 1 minute. एक मिनट में हमारे पास हमारा एक मिनट में कितने बार ये पल्स बीट करता है. We can count that number. How many pulse beats could you count? The number of beats per minute is called as pulse rate. Okay, we can calculate the pulse rate. Pulse rate is number of beats in a minute. So a resting person usually have a pulse rate between 72 to 80 beats per minute. जब हम कोई physical activity नहीं कर रहे होते हैं, when our body is at rest, so हमारा pulse rate 72 से 80 के around होता है. And whenever like we are indulge in some physical activity, ये pulse rate increase हो जाएगा. So similarly, you can place your hand in different parts of your body and you can feel the pulse. Record your own pulse beats per minute and those of your classmates. So you can compare the pulse beat amongst yourself, and you have to insert the values of your pulse rate in the table 7.1 and you can compare them. Now let's move on to the next type of blood vessels, that are veins. Okay, so we have learned about arteries. Arteries हमें हमेशा कैसा blood carry करते हैं? Blood which is rich in oxygen. So veins कैसा blood carry करेंगे? They will carry the blood which is rich in carbon dioxide. कहाँ से carry करेंगे? हमारे different body parts से. हमारे जो भी different cells है हमारे body में, जब उन्हें oxygen मिलता है तो वो different functions perform करते हैं and वो generate करते हैं carbon dioxide as a waste. ओके, सो वेन्स का काम क्या है? इन कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और इसे वापस से हार्ट में लेके आना. और ये हार्ट क्या करेगा? वापस से इसे पंप कर देगा लंग्स में और हम इसे एक्सहेल कर देंगे. सो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन गोस. So the veins, they are having thin walls. Arteries के पास thick wall था, but veins के पास thin walls होते हैं. There are valves present in veins which allow the blood to flow only towards the heart. So veins के पास सबसे पहले thin walls क्यों होते हैं? क्योंकि veins में जो blood flow कर रहा होता है, they flow under low pressure. Okay, इसलिए उनके जो walls है वो thin है. और उनमें valves होते हैं. Valves मतलब क्या हुआ? They are like pocket like structures. Okay, अगर blood ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर बाई चांस ब्लड नीचे आया, दूसरे डायरेक्शन में आया, इन द सेंस ये पॉकेट्स खुल जाता है और उसमें ब्लड फिल हो जाता है. ओके, सो इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ओके, ये पॉकेट्स प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना हो. सो veins, they have valves and this will allow the blood only to flow in one particular direction, that is towards the heart. Let's learn about the circulation. Okay, let's understand the figure 7.3, the schematic diagram of circulation. So ये हमारा lungs है. So हमें पता है हम inhale करेंगे. जब हम inhale करते हैं, कौन सा गैस हम inhale करते हैं? Oxygen. Oxygen हमारे lungs से heart में carry होता है, transport होता है. That would be a proper word. So oxygen lungs से heart में transport होता है through the blood vessel called pulmonary vein. Okay, ये जो word pulmonary है, जब भी आप सुनोगे, remember it always refers to lungs. Okay, and since the blood is going towards the heart, we'll call it as vein. जो भी blood vessels heart की तरफ जाते हैं उन्हें veins कहते हैं. और ये कैसा blood है? ये oxygen rich blood है. ओके, हमने ऑक्सीजन लिया, हमारे लंग्स ऑक्सीजन से फिल हो गया. अब पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट में लेके गए. हार्ट क्या करेगा? इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करेगा एंड ये जो आर्टरीज हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करके हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स में सप्लाई करेंगे. ओके, इट विल बी सप्लाइंग इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ये आर्टरीज और भी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में टूट जाते हैं. ये छोटा, सबसे छोटा ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं. ओके, सो जैसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलता है, वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे अपना एंड एज अ रिजल्ट दे विल जनरेट अ वेस्ट. क्या वेस्ट बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट, ये हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए. सो ये जितने भी ब्लड वेसल्स है कैपिलरीज, ये अब सारे ब्लड वेस्ट को, हमारे जो ब्लड में वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे कलेक्ट करेंगे एंड ये एक
सिंगल ब्लड वेसल बनाएंगे। अब इससे क्या क्या कहेंगे? वेन। ओके अब ये वेन कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स द हार्ट। रिमेंबर वेन हमेशा हार्ट की तरफ जाता है। एंड ये कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? इट इज कैरिंग अ ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये वेन हमारे हार्ट तक पहुंचा। अब हमारा हार्ट क्या करेगा? इसे फिर से पंप करेगा टूवर्ड्स दी लंग्स। हमारे लंग्स में कैसा ब्लड पहुंचा है? द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नाउ एक्सहेल्ड आउट। ओके एंड इस तरह हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। सो जो ब्लड वेसल हमारे हार्ट से निकलता है उसे हम कहते हैं आर्टरी। एंड सिंस ये आर्टरी हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है सो वील नेम इट एज पल्मोनरी artery. So this is how the blood supplies goes on in our body. So refer to figure 7.3. Do you see arteries divide into smaller vessels? Yes. So we have seen that arteries further divide होते हैं smaller vessels में on reaching the tissues, and finally they become so thin, they divide into thin tubes which is called as capillaries. Okay, capillaries इतने छोटे होते हैं, इतने minute और पतले होते हैं, they will supply blood to one cell at a time. Okay, so these capillaries again they will join in order to form veins. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी waste generate हुआ उस वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद आज कैपिलरीज वापस से ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म वेन्स एंड इट विल फाइनली रीच द हार्ट, इट विल एम्प्टी इन द हार्ट. So this is how the circulation goes on in our body. Now let's learn about blood donation. So hundreds of people die due to unavailability of blood. बहुत सारे बार ऐसा सिचुएशंस आ जाता है जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या ऑपरेशंस में ब्लड का लॉस हो गया. बहुत बार इंसान का डेथ हो जाता है बिकॉज उन्हें प्रॉपर टाइम पे ब्लड नहीं मिलता है. सो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ्स. अगर हम जाके खुद ब्लड डोनेट करें तो ये हमारे बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इससे हमें कोई दर्द नहीं होगा एंड इट इज गोइंग टू सेव मेनी लाइफ्स. So blood, they can be donated at hospitals and various other places that are authorized by the government. And these donated blood, they are stored with special care in the blood banks. कोई भी patient को blood चाहिए होता है, they will buy it from the blood banks. Now let's learn about an interesting conversation between Paheli and Buju. So Buju is saying, I'm confused. I have learned that arteries always carries oxygen-rich blood. So Paheli says that, Paheli explained that pulmonary artery carries the blood from the heart. Okay, जो भी blood हमारे heart से निकलता है, उसे हम artery कहते हैं. Okay, it's not that artery हमेशा oxygen rich blood use करेगा, oxygen rich blood supply करेगा, oxygen rich blood carry करेगा. Okay, so whichever blood vessel is coming out of the heart are called as artery. And it carries कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स. कौन सा आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी. ये कैरी करता है, यही बस एक आर्टरी है जो कार्बन रिच ब्लड कैरी करता है हमारे लंग्स में. यही एक आर्टरी है हमारे बॉडी में जो कार्बन रिच ब्लड कैरी कर रहा है. बाकी सारे आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करते हैं. एंड पल्मोनरी वेन, यही एक अकेला वेन है जो कैरी कर रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, वरना सारे वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं. ओके, सो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये दो एक्सेप्शनल्स हैं. ओके, दे आर द एक्सेप्शंस. दे आर द ओनली आर्टरी, pulmonary artery is the only artery which carries carbon dioxide rich blood, and pulmonary vein is the only vein which carries oxygen rich blood. So I hope you all have understood what are the different components of the blood, how the circulation goes inside a body. So in the next video, we will be learning about the heart, and that is going to be really interesting. Stay tuned. Bye-bye. Take care.